Auzu billahi minash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear students of class 8th, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dear students, as you already know that we are reading social science, and in social science our book is Social and Political Life. It is book 3rd, and our unit is public facilities. And also in this we have to see that those, or we can see those facilities which are not easily available in one or other states, what government has to do, or in general what government has to do to provide these facilities to the people living in this country. Today we will take the government's role of providing public facilities. You know, public facilities are important, everyone knows. So someone must carry the responsibility of providing these to the people. That means these facilities to the people, someone must carry the responsibility. This someone, who is someone? It is the government. One of the most important function of the government is to ensure that these public facilities are made available to everyone. Let us try and understand why the government and only the government must bear this responsibility. You know, we have seen that private companies operate for profit in the market. You read about this in the chapter on the story of a showed in your class 7th book. In most of the public facilities, there is no profit to be had. For instance, what profit can occur to a company for keeping the drains clean or running an anti-malaria campaign? A private company will probably not be interested in undertaking such work. Dear students, जैसा कि आपको पता है, जो बुक हम पढ़ रहे हैं सोशल साइंस में, इसका नाम है सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ. इट इज़ बुक 3rd. इन दिस बुक, इन चैप्टर 8, आप पढ़ रहे हैं पब्लिक फैसिलिटीज़. पब्लिक फैसिलिटीज़ में आपने पढ़ा कि बहुत से ऐसी जगहें हैं हिंदुस्तान में, इस मुल्क में, जो कि बहुत बड़ा मुल्क है, जिसकी आबादी 1.36 करोड़ है, या 136 करोड़ आई कैन से, उससे भी ज़्यादा होगी. तो इस बड़े मुल्क में कुछ एरियाज़ ऐसे भी होंगे, ये तो सीधी सी बात है, जहाँ पर पब्लिक फैसिलिटीज़ जो है, देयर इज़ लेक ऑफ पब्लिक फैसिलिटीज़. हमने पानी की बात की, पानी जो कि मेन सोर्स है इंसान की ज़िंदगी का, फॉर लाइवलीहुड, जो कि मेन सोर्स है. इसी तरह दूसरे भी कहीं कहीं दूसरे भी फैसिलिटीज़ में लैकिंग होगी. अब हम कहेंगे कि रूल क्या है गवर्नमेंट का, यानी कोई है जो इस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है लोगों से कि कुछ है गवर्नमेंट में. यानी एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन गवर्नमेंट की ये है कि वो लोगों को इंश्योर करे कि वो उन तक पब्लिक फैसिलिटीज़ अवेलेबल करे. एवरी पर्सन के पास होगी पब्लिक फैसिलिटी. हम देखेंगे सिर्फ ये गवर्नमेंट ही क्यों कर सकता है, ये और कोई क्यों नहीं कर सकता. देयर आर नंबर ऑफ प्राइवेट कंपनीज, व्हाई दे आर नॉट, दे कांट एश्योर अस दैट वी विल प्रोवाइड अस. क्यों नहीं कर रहे हैं वो एश्योर कि हम आपको पब्लिक फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करें? क्योंकि प्राइवेट कंपनी वही काम करेगी जिसमें उसको प्रॉफिट मिलेगा, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो जिसमें प्रॉफिट नहीं मिल रहा है. इसी तरह
اگر ہم دیکھیں گے کہ پرائیویٹ کمپنی جو ہے وہ مارکیٹ میں تب ہی آتی ہے جب اس کو پروفٹ ملے گا. آپ نے پڑھا ہوگا اسٹوری آف شرٹ ان کلاس 7th میں. اسی طرح آپ نے پڑھا ہوگا کہ پبلک فیسلٹیز جو ہے اس میں سے بہت سے ایسے ہیں جس میں کوئی پروفٹ تو ہوتا ہی نہیں. اگر ہم ایگزامپل لیں گے ڈرینز کلین کرنے کا، کیپنگ دا ڈرینز کلین اور رننگ دا اینٹی ملیریا کمپین جو سرکار چلا رہی ہے، کیا اس میں پروفٹ ہے؟ پرائیویٹ کمپنی ایسا کام نہیں کرے گی، کیونکہ وہ وہی کام کرے گی جس میں، یہ تو سیدھی سی بات ہے، جس میں اس کو پروفٹ ہوگا، کیونکہ وہ رن ہی ہو رہی ہے پروفٹ پر. اس کو کوئی کہیں سے اس کو ٹیکس آتا نہیں ہے، کیونکہ اس کو یہاں سے ہی دینا پڑتا ہے. ڈیفینیٹلی وہ کوئی ایسا کام نہیں کرے گا جس میں اس کو یہاں سے ہی دینا پڑے اور وہاں سے کچھ نہیں آئے. اس کو ہم آگے لے جائیں گے اگلے پیریڈ میں. باقی وسلام.